So we were discussing about limits. We were discussing about limits in the last class. Now see, question number 14. Question number 14. So here, um, if you direct substitute, we can see that you will get like this: 0 by 0, sine 0. You are getting like this: sine 0 divided by sine 0. This is 0 by 0, but you cannot. So that means you cannot direct substitute. बट आपको ऐसे दिखते हैं कि लाइक इट इज समथिंग लाइक अ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट फॉर्म. सो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हमें पता है sin x by x as x goes to 0. एंगल के जगह जो आ रहे that will be in the denominator and that angle goes to 0, then this is a standard limit, its value is 1. It's a standard limit, its value is 1. So what we will do here, this is limit x goes to 0. देखो साइन ये एक्स था. सो जो भी एंगल के साथ आ रहे हमें डिनोमिनेटर में भी चाहिए, इसलिए हम क्या करेगा, ये एक से डिवाइड किया. सो बट दैट वाज नॉट देयर, उसको कैंसिल करने के लिए मैंने ए एक से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स. जब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अप्लाई करने के लिए जो एंगल के साथ जो आते हैं वो डिनोमिनेटर में भी चाहिए. सो इसलिए मुझे डिनोमिनेटर में बी एक्स चाहिए था, ओरिजिनल क्वेश्चन में बी एक्स नहीं था, इसलिए मैंने बी एक्स से मल्टीप्लाई किया. नाउ so what will happen, this x will be cancelled. Baki, here is one a and here is one b. That a upon b you can take it outside. Baki, it is like this: limit as x goes to 0, sine ax by ax, the whole divided by sine bx by bx. But this is a upon b into limit of a quotient. You can write as a quotient of the limit. So you can write this as limit x goes to 0, sine ax by ax divided by limit x goes to 0, sine bx by bx. But you know that when x is going to 0, a into x also, as x goes to 0, ax will goes to 0. x 0 को जा रहे, तो उसको आप ax किधर जा रहे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर x को 0 दे देंगे तो a into x also will goes to 0. Similarly b into x also will goes to 0. So इधर ऊपर में ax लिखूंगा, लिमिट ax goes to 0, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीचे bx लिखूंगा क्योंकि x 0 में जाएंगे तो b into x also will goes to 0, इसलिए लिखा है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए. अभी आप देखेंगे तो इट इज साइन ऑफ एन एंगल, दैट इज साइन ax. जो एंगल की जगह ax था वो डिनोमिनेटर में भी आ गया ax, and that ax that is going to 0. So it is of the form sin limit of sin x by x as x goes to 0, whose value is 1. So it is, this is equal to a upon b into 1 divided by 1, that is 1, that is a upon b. So the answer is a upon b. Got it? आया समझ में? कुछ तो बोलो. Did you understood? Yes, sir. Okay, so we'll go to the next question then. Sine, आप इधर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x गोस टू पाई, x को पाई दे देंगे तो आपको ऐसे मिलेगा साइन पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस पाई. सो साइन 0 0 डिवाइडेड बाई 0 मिल रहे. सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन विल नॉट वर्क. So you can see that this pi is constant, so that pi you can take outside. So 1 by pi limit, देखो साइन
pi minus x divided by pi minus x. So it is of the form sin x by x form. It is of the form sin x by x. Okay. So limit x goes to 0, this is equal to 1. So you can see that when x is going to pi, when x is going to pi, when x, क्योंकि इधर x going to pi, देखो x is going to pi, x is going to pi minus x will goes to where? pi minus x किधर जाएगा? Zero. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, x के जगह पाई दे दो, पाई माइनस पाई, इट विल गोस टू 0. सो इधर आप Yes. ऐसे लिख सकते हैं x goes to pi है, so as x goes to pi minus x goes to 0, so आप pi minus x goes to 0 लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं. अभी अब देखेंगे तो दिस वन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट ऑफ sine of an angle by that same thing, sine theta by theta, that theta goes to 0. So what is the value? 1. So it is 1 by pi into 1. So the answer is 1 by pi. Pi. Okay. Yes, sir. Now, next question. Cos x divided by pi minus x, as x goes to 0. x 0 दे देंगे तो आपको ऐसे मिलेगा cos 0 divided by Pi. pi minus 0. and cos 0 कितना है? 1. 1 divided by pi, हो गया आंसर. Direct substitution works there. Okay. Now here direct substitution करो, cos 2 into 0, 0 minus 1 divided by cos 0 minus 1. cos 0 is 1, so 1 minus 1 divided by 1 minus 1. So आपको मिल रहा है 0 by 0. So either direct substitution will not work, isn't it? Right? Yes, sir. So अभी क्या कर सकते हैं? Direct substitution will not work. Now we have to see, factorize करने के लिए इधर कुछ नहीं, conjugate से multiply करने के लिए अभी फिलहाल कुछ नहीं. सुनिए, हमारा जो लिमिट क्या था? that trigonometrically one limit was like this: limit of sin x by x as x goes to 0 is equal to 1. Then there is another trigonometric limit I told you, that is 1 minus cos x by x as x goes to 0. Zero. That is going to 0, I think, right? Yes, sir. Yeah, 1 minus cos x by x, that is going to 0. So if you are going to apply that also, you will get 0 by 0 again. ऐसे कुछ किया है तो भी, so that is not possible. So what to do here? So we have to, that is why I told you this trigonometric limits and trigonometric chapters, it's are interrelated. That is why these are the two very 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 important chapters for your next year. जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आएगा उसमें से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़्यादा आएगा. सो लिमिट, सो मैंने क्या किया, ऊपर से भी नीचे से भी मैंने सिर्फ माइनस कॉमन निकाला, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x बाय कॉस x. कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन निकाला, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन निकाला. ओके, ऑलराइट. नाउ सो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ाई किया था, you have studied one identity, cos 2x is equal to, so that is why I told you these are very important identities, cos square x minus
Sin sine square square x. x. Then 2 cos square x minus 1 minus 2 1 sin square x. ऐसे आपने आइडेंटिटी x. बढ़ाया किया था। तो अभी इसमें से आप तो ये वाला आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x. So this is equals limit x goes to 0, 1 माइनस cos 2x के जगह आप 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बाई 1 माइनस cos x। ठीक है, अभी क्या करना, इधर अभी भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर 2 साइन स्क्वायर 0, 2 साइन 0 इज 0, सो अगेन नाउ यू आर गेटिंग 0 बाई 0 ओनली। सो डू दैट टेक्निक, जैसे जस्ट 1 प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो देन दिस बिकम लिमिट x goes to 0, look at that method, 2 sin square x into 1 plus cos x को वैसे ही लिखा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए, 1 minus that is a square minus b square. So 1 plus cos x into 1 minus cos x is 1 minus cos square x, and 1 minus cos square x is sin square x. So you can write this as sin square x. So now what will happen? This sin square x cancels. You will get like this, limit 2 into 1 plus cos x as x goes to 0. Now direct substitute, it is 2 into 1 plus cos 0. That is 2 into 1 plus cos 0 is 1. So 1 plus 1 is 2. So 2 into 2. So your answer is 4. Got it? This is one important question. See that the method or how we did that, that's important. इधर एक 1 प्लस cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला यूज किया, but you cannot by heart this, like, so this is some techniques. So by doing problems like this we'll get more and more idea. Clear? Yes, sir. Okay, now we'll go to the next question. Question number 18. So एक तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, a इंटू 0 ये प्लस, सो a इंटू ऐसे आएगा ना, a इंटू 0, सो a इंटू 0 इट इज 0, मैंने क्यों में लिखा 0 प्लस x इंटू 0 इंटू cos 0 is 1, again 0 divided by b इंटू sin x, sin 0 is 0, so that is आपको मिल रहे 0 by 0, correct? So that means you cannot do direct substitution. Okay. Now, so what to do? See, you can take this is equals limit x goes to 0. You can take x common from the numerator. So it is a plus cos x divided by b sin x. Okay. So now what I will do, I got some x here, I got some sin x here. If I take this x to the denominator, it will be like this. See this, limit x goes to 0, a plus cos x
into b into sin x by x, right? Isn't it? Yes, sir. Yeah. So now if you want, you can split this. You can split this like this: a plus cos x by b into 1 by sin x by x. ऐसे आप split कर सकते हैं. Limit x goes to 0. Now, limit of a product is the product of their limits. So this is limit a plus cos x by b as x goes to 0 into a limit 1 by sin x by x as x goes to 0. Right side में limit of a quotient, that is the quotient of their limits. So 1 goes to 1 only. Sin x by x as x goes to 0, it goes to 1. So it is 1 by 1, 1, right? So this will be either 1 by 1, this will be 1 by 1. Either 0 दे दो. A plus cos 0 is 1 divided by b. So that means a plus 1 divided by b. A plus 1 divided by b. Got it? Understood? And keep one thing in mind: limit sin x by x goes to, or sin x by x is equal to 1 as x goes to 0. Not only that, x by sin x is also 1 as x goes to 0. Okay? All right? Yes, sir. Yes, sir. Look at the question number 18 for 1 minute. Just try to understand that. Okay, we'll go to the next question now. Limit x goes to 0, x into secant x. So पहले substitute, direct substitute करके देख लेना. 0 into secant 0. That is 0 into secant 0 is 1. Right? Secant 0 is 1. क्योंकि secant is a reciprocal of cos. So 0 into 1. 0 into 1, it is 0. No problem. That means this function is going to 0. X into secant x is going to 0 as x goes to 0. Okay. Now, next question. इधर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin 0 0 0 plus b into 0 0, so 0 plus 0 0 divided by, again denominator may be 0 plus 0, so you are getting 0 by 0, direct substitution. So direct substitution will not work. So now what to do? Sin ax plus bx divided by ax plus sin bx. क्या कर सकते हैं मुझे बताओ? एक तो आप क्या कर सकते, डिवाइड numerator and denominator by x. So what will happen? This is limit sin ax plus bx divided by x, the whole divided by ax plus sin bx divided by x as x goes to 0. Now this equals, जब आप डिवाइड करेगा, you have to divide लिमिट x गोज टू 0. जैसे a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, मतलब आपको a बाई सी प्लस b बाई सी दोनों टाइम को डिवाइड कर देना. तो ये हो जाएगा
sin ax by x plus bx by x divided by ax by x plus sin bx by x. Don't think that this x and this x, क्योंकि this ax angle में है, this x not in the angle, so it will not got cancel. But you can see here this bx का x इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा. So आपको मिलेगा लिमिट x goes to 0, it is sin ax by x plus b the whole divided by a plus sin bx divided by x. Okay, so now अभी मैं क्या करूँगा, इधर मुझे sin ax है, इधर भी क्या चाहिए था, ax चाहिए था, तभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट था, लिमिट as x goes to 0 sin x by x is 1. ये वाला लिमिट अप्लाई करना है तो जो एंगल में आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए. इसलिए क्या करूँगा, मैं इधर फर्स्ट टर्म को ए से डिवाइड किया, बट सिंस इट वाज नॉट देयर मैंने उसको ए से मल्टीप्लाई भी किया, तो इन इफेक्ट वो ए कैंसिल हो जाएगा. नीचे साइन बी एक्स को मैंने b से डिवाइड किया, बट वो b को कैंसिल करने के लिए b से मल्टीप्लाई किया, दैट्स ऑल. मैं जस्ट मेड सम अरेंजमेंट्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ आई कैन अप्लाई लिमिट. I'm just doing it one step now. Listen carefully. I'm going to apply limit. So it is limit of a quotient. Limit of a quotient is the quotient of the limits, right? Okay, I'll write that also for you. You can write this is, इसके बाद का step है. ऐसे आएगा limit x goes to 0 a into sin ax by ax plus b divided by limit x goes to 0 a plus sin bx by bx into b. Correct? Are you getting? अभी लिमिट ऑफ ए क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ देयर लिमिट्स. अभी लिमिट ऑफ द न्यूमरेटर जब करते हैं टाइम, व्हाट विल हैपन, इट इज अ सम ऑफ टू फंक्शंस, राइट? आर यू गेटिंग? Hello, are you getting the point? Yes, sir. Yeah, so there Yes, sir. again it is sum of two functions. You can see that it is sum of two functions here, something plus something or something plus something, sum of two functions. So their limit is limit of their sum. Okay, so it is like this limit. You can do it in one step. इतना ज़्यादा step by step लिखने का कोई ज़रूरत नहीं. a sin x by ax plus limit b as x goes to 0, इधर भी as x goes to 0, the whole divided by limit as x goes to 0 a plus limit sin bx by bx into b as x goes to 0. And now हमें पता है कि x goes to 0 है तो ax also will goes to 0, bx also will goes to 0. अभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे. जब इधर लिमिट अप्लाई करेगा, फर्स्ट वन इधर अगेन सब कांस्टेंट इनटू फंक्शन, so constant into, so a into limit of that function, and that is limit ax goes to 0 sin ax by ax, its value is 1, so a into 1 a plus limit of b as x goes to 0, b is a constant, limit of a constant is constant, so it is plus b divided by
limit of a as x goes to 0, limit of a constant is constant, plus next one bx goes to 0, sine bx by bx into b is constant, that take outside. The limit of sine bx by bx is 1 as bx goes to 0, so it is a plus b divided by a plus b. and मैंने बोला है कि a plus b is not equal to 0, 0 नहीं है, so that you can cancel a plus b by a plus b, that is equal to 1. Got it? आया समझ में? Yes, sir. Yeah. So shall we go to the next question now? Now x goes to 0, cosecant x minus cotangent x. सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देख लेना. दिस इज इक्वल cosecant 0 minus cotangent 0. Cosecant is actually 1 by sine 0 minus cotangent is 1 by tan 0. नहीं तो it is uh, cot is reciprocal of 9, so sine cos 0 by sine 0. So you can see that sine 0 is 1. So 1 by 0 minus 1 by 0. So it is undefined, right? Isn't it? It is undefined. So you cannot सर direct 0 substitute. Eh? 0/0 होगा ना? Cosecant 0 is 1 by sine 0, na? Yes, sir. So 1 by sine 0 is 0. So 1 by 0 minus cotangent is cos by sine. Cos 0 by sine 0. Cos 0 is 1. 1 by sine 0 is 0. So you are, when you direct substitute, what you are getting is 1 by 0 minus 1 by 0. नहीं, ये तो 0 में दोनों डिफाइंड नहीं है. So आपको ऐसे मिल रहे हैं कि not defined minus not defined. Isn't it? Cosecant 0 is not Yes, defined. Cot 0 is not defined. So you are getting not defined minus not defined. That means you cannot apply direct substitution. So now we have yes, to sir. check for some other method then. So this is limit simplification नहीं है, दूसरा कुछ method नहीं है मेरे पास अभी. So it is 1 by sin x minus this is cos x by sin x. Cotangent Yes. is, so this becomes a limit x approaches to 0. 1 sin x is a common denominator, so 1 minus cos x by sin x. इधर भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो you are getting is 0/0. 0 by 0, but we have that identity cos 2x. Cos 2x is equal to uh, 1 minus 2 sin square x. So इसमें से आपको मिलेगा 2 sin square x is equal to 1 minus cos 2x. मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है करके. So इधर एंगल आप हाफ करेंगे तो 1 minus cos x. So that is 2, इधर भी एंगल हाफ करना, 2 sin square x by 2. ठीक है? So similarly there is another expression for cos 2x is 2 cos square x minus 1. So इसमें से आपको मिलेगा 2 cos square x is equal to 1 plus cos 2x. So आप एंगल हाफ करेंगे तो 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2. These are very important substitutions. So 1 minus cos x को आप 2 sin square x by 2 लिख सकते हैं. 1 plus cos x को देखो 1 plus cos x, nothing to simplify there, सिंपल फॉर्म में, बट 1 plus cos x के जगह प्रॉब्लम्स में आप 2 cos square x by 2 लिख सकते हैं. सिमिलरली 1 minus cos 2x के जगह 2 sin square x लिख सकते हैं. 1 plus cos 2x के जगह 2 cos square x लिख सकते हैं. Then again sin 2x, sin 2x is 2 sin x cos x, डबल एंगल फॉर्मूला. सो आप sin x को एंगल हाफ कर दिया, सो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2, ऐसे लिख सकते हैं. So coming back to this, here this is limit x goes to 0, 1 minus cos x को आप 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन एक्स को आप 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं। सो वैसे लिखने के टाइम टू टू कट हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, बाकी आपको मिलेगा लिमिट x goes to 0, it is sine x by 2 divided by cos x by 2, which is limit x goes to 0 sine by cos tan x by 2. So अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, tan 0 by 2, tan 0 by 2 मतलब it is tan 0 and tan 0 is 0. That means the answer is 0. Got it? आया समझ में? So these Yes, are sir. very Yes, sir. these are very important, these formulas are, they are very important formulas. In many problems this will help you to simplify your expressions. Okay, now we'll go to the other question. Okay, so इधर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो, सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इंटू 2 इंटू एक्स को पाई बाई 2 देना, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2. सो ये 2 कट होगा, सो tan pi is 0, pi by 2 minus pi by 2 is 0. That means direct substitution will not work. Okay, now so what we can do is just 1 second. If you have any idea, you can tell me. See, this x minus pi by 2, here x minus pi by 2 the denominator में है, x minus pi by 2, just call it as say some y. ठीक है, नहीं तो there is another technique also, there is a formula, जैसे sin x by x देखा है ना, tan x by x will also goes to 1 as x goes to 0. This we didn't study, but this is also true. ठीक है, you can keep that formula in mind. Tan x by x, देखो उसका proof बताता हूँ. Tan x by x मतलब क्या हो रहा है? Tan x is sin x by cos x, right? Divided by x. So limit, are you listening me? Limit x goes to 0. So that is limit x goes to 0. This is sin x divided by cos x. Instead of division we can multiply with the reciprocal. So ऐसे आएगा. That means limit x goes to 0 sin x by ex cos x. अभी जब हम अप्लाई करते टाइम क्या करेगा, sin x by x को हम एक ही फंक्शन कंसिडर करेंगे ऐसे. दिस इज लिमिट x goes to 0 sin x by x into 1 by cos x. नाउ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, इसका लिमिट इज गोस टू 1, so 1 into 1 by cos 0 is 1, so 1 into 1 1. So this is also a standard result, limit of tan x by x is also 1. Are you getting? So this can be written like this, tan into this, अभी टाइम खत्म हो जाएगा, this I will tell you tomorrow, this one, but you just understand